This is NDTV, and you're watching Classics. The lane where Mamata Banerjee lives. Mamata Banerjee has made 30B Harish Chatterjee Street in South Kolkata something of a landmark in this city. All of 48 years old, she has earned the accolade Tigress of Bengal and has shaken up the 27 years of left front rule as nobody single-handedly has before. Today, it's about 3 o'clock in the afternoon and Mamata is about to begin her campaign for the day. 3 o'clock seems a little late in the day for a politician to begin her day when she's seeking yet another term in Parliament. But that's the way she is. A late riser, but a hard political worker who will work late into the night. We'll catch up with her at her home here in 30B Harish Chatterjee Street. The house with the red tiled roof. That's where Mamata Banerjee lives with her extended family of several brothers, sisters-in-law, mother, and of course little nephews and nieces like this one here, Aniket. Which class do you study in, Aniket? 5. You're in class 5? Yes. And what do you call Mamata Banerjee? She actually is actually my Pishi, my father's sister, but I call her Didi. Like everybody else? Yes. Okay. Aniket is of course a little nephew here, but there's nobody else other than Mamata Banerjee in the family who has joined politics. She is the lone Banerjee of this family in the political arena. দিদির তো কোনো একটি মেয়ে তো আপনার হ্যাঁ দুটি মেয়ে তো একজন এরকম পলিটিক্স নিয়ে ব্যস্ত আপনার কিরকম লাগে ভালো লাগে হ্যাঁ আপনি ওনাকে এনকারেজ করেন হ্যাঁ আপনি ওনাকে উৎসাহ দেন আমি উৎসাহ দেয় না পাবলিক দেয় আপনার কি মনে হয় আমার কিছুই মনে হয় না পাবলিক যা করবে সেটাই আমার ভালো যখন মমতা ব্যানার্জি ছোট ছিল তখন আপনি কখনো ভেবেছিলেন কি এইখানটা এসে ভাবতে পারিনি কিন্তু কিছুটা বোঝা গেছিল কেন কি করে এই পড়াশোনার দিক থেকে বাবু ওর বাবার সঙ্গে করতো আপনার নিশ্চয়ই খুব গর্ব হয় আমার গর্ব না আমার গর্ব পাবলিকের জন্য बधाई देना चाहती हूँ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ लेकिन ये भी है कि हम लोग हर दफे एक बात कहते हैं कि जो हमसे टुकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो हम लोग संघर्ष करते हैं लड़ते हैं वो लोगों को लड़ाई जिंदगी भर रहेगा आम जनता के लिए एक बात याद रखना रोशनी चाक से होता है सितारों से नहीं मोहब्बत से होता है हजारों से नहीं हम लोग को लड़ाई आम जनता के लिए लड़ाई ये लड़ाई हम लोग लड़ते जाऊंगा अगर इसमें कोई कुछ कहे कहने दो कोई कुछ बोले बोलने दो बदमाशी करे बदमाशी करने दो लेकिन एक वोट हमको दो वो वोट का नाम है जोड़ा फूल जो हम लोग कहते हैं जय जोड़ा फूल जय तृणमूल तृणमूल कांग्रेस तृणमूल फॉर पीपुल आप लोग बहुत बढ़िया रहे डरिए मत आप लोग चुनाव केंद्रों में जब जाएंगे अगर आइडेंटिटी कार्ड रहेगा सब में लेके जाइए अगर नहीं है तो रेशन कार्ड है नहीं तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है वो लेके जाइए किसी भी हम बदमाशी करते हैं वो चाहते नहीं है हम जनता वोट दे
लेकिन आपको वोट छोड़ के लोग तुरंत नहीं बच सकते हैं। इसके लिए आपको परिवार का काम करना जैसा आपको हक है, एक वोट देने का हक भी आपको उससे ज्यादा है। इसके लिए गांधी जी लड़ाई किया था, इसके लिए नेताजी लड़ाई किया था, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ाई किया था। যারা আজকে বলছে সরকার গঠন করবে, বড় বড় ক্যালকুলেশন করছে। Orphanganj is not the best address in town, but it's also one of the most cosmopolitan. There are Hindi-speaking people here, Bengali-speaking people here, and if you notice, Mamata Banerjee is speaking in a bit of Hindi, in a bit of Bengali, and also in a bit of English. The language really doesn't matter for her. It's the message that she must get across. अच्छा रही आप लोगों ने किसी का बात सुन के कभी हम लोगों से दूर हटना मत। आप लोगों ने सबसे मोहब्बत के नजदीक में रहा। ধন্যবাদ জানাই কে তিরঙ্গা আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং নমস্কার। মা ভাই বোনেরা আমার, আপনারা জানেন I've just been given Mamata Banerjee's schedule for this evening. It seems she has just one major rally later in the evening. For the moment, she's going from one small locality to another, one housing colony to another, reinforcing that one image that has served her so well for so many years, that of the girl next door. আমি আপনার কাছে কিছু বলি, দরকার হলে মানুষের স্বার্থে মানুষের মাথার কাছে মাথা নত করে বারবার বলবো, আমার মাথা নত করে দাও যে তোমার চরণ ধুলার তলে সকল অহংকারে আমার ডুবাও চোখে জলে। কিন্তু তেরঙ্গা ঝান্ডাটা যখন নিয়ে এসছি, আমরাও ছোটবেলা থেকে কংগ্রেস করেছি, এই ঝান্ডাটি সিপিএম এর পদতলে কখনোই বিক্রি করে দেবো না। I've been covering Mamata Banerjee for several years now, and I notice a distinct change in style. Instead of a harsh, strident tone that she has always taken in the past, she's much more mellow, much more mature perhaps. She has clearly been reading the exit polls that have been coming out after the last two phases of elections, and she has devised this one line that seems to be reaching home to every voter that she's addressing over here. Theirs, she says, is a politics of calculation. Calculation to form a coalition and form a government, third front with Congress without. Hers, and I assume she means the NDA, hers is a politics of conclusion. It's a way with words, and Mamata Banerjee certainly has it. As Mamata Banerjee crawls along from housing colony to housing colony, there's one theme that she has been highlighting all the while, and that is the theme of the stability of the NDA government. But in the last 5 years, she hasn't exactly been a shining example of that stability herself. She was railway minister, quit over the Tehelka, tied up in 2001 with the Congress for assembly elections in West Bengal, and just a couple of months ago, she was back in the ministry as Minister for Coal. Ask her to explain, and she will tell you it's history. She's now looking at the next 5 years, at the future. আপনাদের কৃতজ্ঞতায় আমরা সত্যি আপনাদের কৃতজ্ঞ মা। বড়দের সাথে সকলকে জানাই
Banerjee has been speaking almost continuously for the last 3.5 hours now. She's winding up her Patho Shobha, this little system of going around little padas on her jeep addressing the public. She's now headed for Kolkata Northeast constituency, a constituency that is a bit of a lion's lair, or perhaps could even be her Waterloo. That's where her former right-hand man, Sudeep Bandyopadhyay, is challenging her current right-hand man, Subrata Mukherjee. A meeting at Beedon Street at Kolkata Northwest is her next stop.